As an organic chemistry, I sent you a crash course video as well. As an organic chemistry, briefly or quickly speaking, it's the chemistry of carbon compounds, right? I mean, if you know a lot of carbon compounds, TK, so it's the chemistry of these things. एक second. अच्छा, Sir, can you send the board link? ठीक है, I'll share the board link. Just 1 second. Share. I don't know why it's untitled. किया था. अच्छा, so it's O-levels October, November 2021. And right now, it's organic one. You copy board link. Achha, this chemistry of carbon compounds. So everything that's related to carbon compounds, that's it's chemistry. Like you've got glucose, that's C6H12 or 6. You do know about glucose, okay? That's just an example. Uh, so that's one of the examples. Achha, what are carbon compounds? Carbon compounds जो होते हैं ना वो होते हैं आपका सारा का सारा what is made out of carbon? Living organisms. I mean, the chemistry of life revolves around these compounds. ठीक है, everything to do with the chemistry of life, living organisms. ठीक है, मेडिसिन आप पढ़ते हो, एग्रीकल्चर, ठीक है, सो बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेडिसिन एक्सेट्रा. मेडिसिन किसी ने डॉक्टर बनना है तो that's all the chemistry of carbon compounds. ठीक है, nature has chosen carbon as the special ingredient. Everything is made out of carbon. And dead living matter के साथ ना what happens is when you have dead living organisms, over billions of years, so what happens with dead living organisms over billions of years? They turn into fossil fuels. Okay, so it's a huge industry. Fossil fuels, medicine, agriculture, biology related anything. That's all. Whenever you talk about these things, you're basically talking about the chemistry of carbon compounds. Okay, if there's a reaction that's going on in your cells, that is basically organic chemistry. If there's something happening to a plant, that's organic chemistry. Okay, if there's something happening to a fuel, that is also organic chemistry. Okay, is this clear? Was that clear? Minail Hamza, is this clear? Sir, Sir, can you repeat? नहीं क्या चीज नहीं वही कि it's just the chemistry. Carbon Yes, sir. carbon compounds is the chemistry of living organisms. ठीक है. Okay, sir. अच्छा, then you have a question कि why carbon? मतलब why is carbon so special? What happened to carbon? मतलब why did nature, ठीक है, and remember this is only true for planet Earth. On some other planet this might not be the case. As a planet Earth के ऊपर what happens, why is carbon so important? Carbon is important because carbon makes 4 strong bonds. It makes 4 really strong. As it makes 4 really strong bonds. So when it makes 4 really strong bonds, not a lot of elements actually make 4 strong bonds. Like group 4 elements, they tend to make 4 bonds. ठीक है, carbon is in group 4. Group 5, जो है, they have just 5 valence electrons, so they need 3 electrons. They would only make 3 bonds. Group 6 would make just 2 bonds because it already has
6 electrons, and group 7 is going to make exactly one bond. Like if I have a group 6 element, for example, a group 6 element like oxygen, it will have a total of 6 electrons. One second. As it's going to have a total of 6 electrons. So it needs 2 electrons. So what it would do is it's going to find 2 electrons from somewhere. Like if there's a hydrogen atom somewhere, and there's another hydrogen atom somewhere, okay? So if you've got 2 hydrogen atoms, what it would do is the hydrogen atom has 1 electron. This other hydrogen atom also has 1 electron. So it's going to pull that 1 electron, it's going to pull that 1 electron, okay, and it's going to make 2 bonds, just 2 bonds. It needs 2 electrons. So it's going to make 2 bonds, and the H atoms are going to get pulled towards this oxygen, okay, because oxygen needs 2 electrons to complete its outer shell. This other H atom would also get pulled towards oxygen. So is this clear? Okay, group 6 makes 2 bonds. But the good thing about this is that group 4 makes they make 4 bonds, right? And why is making 4 bonds so important? Making 4 bonds is important because when you're able to make 4 bonds, you can make complicated structures. Okay, think of this as a building block. If something makes only 1 bond, you can't really make a complicated structure out of it. If something makes 4 bonds, you can make a very complicated structure out of it. Okay, there might be an atom that would be bonded over here. There might be an atom bonded over here. So, but you can make really complicated structures from an atom that's making 4 bonds. Okay, this other carbon atom would also make 4 bonds. Let's say with H and one with N. Over here it's with carbon. This carbon would also make 4 bonds. So it will just simply continue, and you can make a very complicated structure because carbon makes so many bonds. Is this clear? Was that clear? Minahil, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो पहली चीज जो सीखनी है ना वो ये कि you've got organic. हर चीज, everything is made out of carbon. ठीक है? Living organisms, complicated structures, they're all made out of carbon compounds. Group 4, group 5, group 6, and uh, group 7 elements are also present. Group 4 has carbon and silicon. Silicon also makes 4 bonds, but it doesn't make strong bonds. Group 5, I mean, this is what your skin would probably look like, or your hairs would actually look like. I mean, everything is interconnected. Every carbon atom is bonded to other carbon atoms. They're bonded to other carbon atoms. There might be other elements attached to it as well. So it's a big, complicated structure. As a group 5 has nitrogen and phosphorus. Group 6 has oxygen and sulfur. I mean, it has other elements as well, but these are the common ones. 7 has fluorine, chlorine, bromine, and iodine. So I didn't draw all of them. Now, the very first thing जो कि हम इस class में करेंगे, that is you have to learn how to draw correct structures. That's one of the most basic things that needs to be done. You have to learn how to draw correct structures. So every atom should make the right number of bonds. Like if I have carbon and I've got an oxygen, I've got carbon, oxygen, and nitrogen. Okay, what's wrong with them? कि अगर ऊपर देखो ना, carbon makes how many bonds? It makes 4 bonds, right? So right now it's making how many bonds? It's just making 1 bond. Okay, so it should be making 4 bonds. So there must be 4 other bonds. It could be a double bond as well. Now it's making 4 bonds, but with what? You can add other atoms. Abhi aapki marzi hai, you can add anything. I can add a fluorine, I can add an oxygen over here. Okay, but now this carbon is fine. Carbon is always going to make 4 bonds. Okay, is this clear, Hamza, Wasna, Minahil, is this clear? Yes, sir. Wasna clear?
Yes, sir. ठीक है, so remember that carbon makes 4 bonds always. Oxygen is in group 6. How many bonds does it make? Oxygen is in group 6, it makes 2 bonds. Okay, so it's already making 2 bonds, one with nitrogen, one with this carbon atom. So this oxygen is also fine. This oxygen is also fine. It's making 2 bonds with carbon, so that's also fine. Fluorine is in group 7. It's supposed to make just 1 bond. So it's making exactly 1 bond. And you've got nitrogen over here, which is in group 5. So it should be making how many bonds? It should be making 3 bonds. Right now it's making 1 bond. So you can add 2 more bonds, maybe separately, okay? Maybe add a H atom and another H atom. Okay, now this is fine. एक H इसमें add कर लेना कि H has just 1 electron, always makes 1 bond. So is this clear that now this is a correct structure that you've drawn of a molecule? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बीच में वैसा बहुत ज़्यादा आवाज़ आई है. अच्छा, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ना डिस्प्लेड फॉर्मूला में शो कर देता हूँ कि you should learn how to make, that's the very basic thing, ठीक है? So I have these molecules. Let's look at these molecules, ठीक है? Let's try and अच्छा, let's look at these molecules one by one. ये सारे correct हैं, ठीक है? But देख के पता लग जाना चाहिए correct है. How many bonds is this carbon making? It's making 4 bonds, right? It's supposed to make 4 bonds. अभी ये ना देखो कि क्या है ये, ठीक है? अभी उनको ignore करो. Just make sure is the structure correct or not. This carbon, is it making 4 bonds? It's making 1 over here, 1 over here, 1 over here, 1 over here. So they're all making 4 bonds. ठीक है? This carbon over here, let's look at this carbon atom. It's making how many bonds? 1 on the top, 2 over here, and 1 on this side. So that's 4, right? This carbon atom over here is supposed to be making 4 bonds. So 1 top, 1 bottom, 2 on this side. So it's making 4 bonds. So किसी को भी देखोगे ना, oxygen should be making 2 bonds, group 6. It is making 2 bonds, right? Carbon, I mean, look at this carbon atom, it's making 4 bonds, okay? So the first thing, very first thing you have to learn is you have to learn how to draw the correct structure. या एक कहाँ से अभी उसको छोड़ दो, बस देख के ना आपको पता लग जाना चाहिए कि the structure is correct. Look at this carbon atom. It's making 4 bonds, 2 on this side, 1 over here, 1 on this side. Oxygen should be making 2 bonds, 1 एक ऊपर किया उसने bond, एक इधर किया, it's making 2 bonds, right? तो make sure you know this. तो एक छोटा सा काम पहले करो, ठीक है? Just a small assignment. I'm going to draw incorrect structures. बल्कि मैं ये साथ ही ना ये पहले लिख लो कि who makes how many bonds? Group 4, Group 5, Group 6 and Group 7. ठीक है? Who's going to make how many bonds? Done, sir. ठीक है? अच्छा, once you're done with that, I'm drawing incorrect structures or incomplete structures. एक का मैं example कर लेता हूँ कि I have this molecule. बीच में मैंने oxygen डाल दिया, इधर मैंने I've put a C over here and I've added an N over here. ठीक है? Now I'm asking you, now you have all these atoms, ठीक है? Think of, वो Lego नहीं है जैसा Lego से आप खेलते हो. Think of, आप उनको connect कर रहे हो, ठीक है? आपके पास है, you have a carbon, you've got a silicon, nitrogen, phosphorus, oxygen, sulfur, fluorine, chlorine, bromine, iodine and hydrogen, ठीक है? It's up to you. It's totally your choice कि कौन सा पीस आपने उसमें से उठाना है और उसको कनेक्ट करना है उसके साथ, ठीक है? The only thing that I'm looking for is कि जो मर्जी करो, आपकी मर्जी, जो मर्जी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है? The only thing that should happen at the end is कि स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए. इस कार्बन को मुझे बताओ कि जल्दी से बताओ कि कितने और बॉन्ड्स बनाने चाहिए? Sir, 3. 3 और जी एक वो पहले ही बना रहा है, ठीक है? जी एक पहले से बना हुआ है, तो वो जो फिर 3 और. तो मैं एक फ्लोरीन ऐड कर देता हूँ, एक मैं जी सल्फर ऐड कर देता हूँ. सल्फर 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो अब पूरे हो गए, जी सर. ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी मर्जी है, ये लेगो के जैसा वो पीसेस पड़े हुए ना, इधर से जो मर्जी उठाओ उसको वहां पे जोड़ दो, ठीक है? बस एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि सारों के बॉन्ड्स पूरे होने चाहिए. फ्लोरीन ने एक ही बनाना था, एक ही बनाया उसने. सल्फर वाज सपोज्ड टू मेक 2 bonds, वो उसने 2 बनाए. कार्बन इज गोइंग टू मेक 4 bonds, इट इज मेकिंग 4 bonds.
अच्छा, अगले वाले कार्बन पे आ जाते हैं। इसके साथ फिर वही मसला है कि इट्स मेकिंग टू बॉन्ड्स, तो हाउ मेनी मोर बॉन्ड्स शुड इट मेक? टू। तो टू एच, और अच्छा एच उठा, हाइड्रोजन H जी। अच्छा सबसे कॉमन जो है ना वो एच है, मतलब यूनिवर्स के अंदर एक्चुअली सबसे कॉमन एच है। मतलब इस तरह सोचो कि लेगो, आपका लेगो का वो पूरा सेट है और उसके अंदर ना एच के एटम ना सबसे ज्यादा है, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर एच के एटम, मतलब आपका पूरा सन जो है ना दैट्स हाइड्रोजन के एटम्स, ठीक है। सो यूनिवर्स के अंदर सबसे जो अबंडेंट एटम्स है ना वो एच के हैं। तो अक्सर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर ना कहीं पे भी आप देखोगे ना ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नंबर वन जो चीज आपको नजर आएगी ना, मतलब बाकी एलिमेंट्स भी नजर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, मतलब इसको अगर उठाओ ना तो इसमें आपको ऑक्सीजन वगैरह भी नजर आ रहा है, बट सबसे जो कॉमन चीज है ना, एक तो कार्बन है, हर चीज कार्बन से बनी हुई है, बट द मोस्ट कॉमन थिंग दैट यू वुड नोटिस इज एच, ठीक है। एच इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एटम्स आउट देयर, ठीक है, इन द यूनिवर्स। तो ये नहीं है कि बाकी नहीं हो सकते, बाकी भी हो सकते हैं, लेकिन एच की अबंडेंस ज्यादा है। अच्छा ऑक्सीजन ठीक है, ग्रुप 6 में होता है कि नहीं? ठीक, सर ग्रुप 6 के 2 बॉन्ड्स होते हैं तो सही है। तो ये सही है। अच्छा, नहीं, हाँ सही है ना, टू ग्रुप बॉन्ड। जी सही है। जी सही है। अच्छा ये भी सही है, एच ने एक ही बनाना था, वो भी ठीक है। अच्छा कार्बन ठीक है। नहीं सर, इसको एक और चाहिए। अच्छा इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ अगर मैं ओ जोड़ूं क्या मसला होगा? कार्बन तो ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर O के लिए मसला होगा। फिर ओ को ठीक करो, ओ के साथ एक एच जोड़ देते हैं, ठीक है, ओ के दो बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। तो जी सर। इट्स अप टू यू, जो मर्जी करना है, वो लेगो के पीसेस उनको बस कनेक्ट करना है, बस सही तरीके से कनेक्ट करना है। अच्छा नाइट्रोजन के और कितने होने चाहिए? ग्रुप 5 है। ग्रुप 5 के 3 बॉन्ड्स होते हैं ना सर? हाँ तो तो इसको, 3 आई थिंक। तो मतलब कि 1 मोर चाहिए क्योंकि पीछे से 2 हो हाँ रहे हैं। ठीक है, तो उसके दो बॉन्ड्स इधर बन रहे थे, एक और उसने बनाना है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो है ना, जो भी बना है, हमें नहीं पता कि क्या है, लेकिन स्ट्रक्चर ठीक है, क्लियर है। जी सर। एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने ज्यादा होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इवन इफ यू पिक द ह्यूमन हेयर इज मेड अप ऑफ मेनी मेनी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आप कोई भी रैंडम मॉलिक्यूल ड्रॉ करोगे ना, हो सकता है यूनिवर्स के अंदर या अर्थ के ऊपर ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। अच्छा तो अब ये करो कि नाउ द स्ट्रक्चर इज करेक्ट, तो अब ये एक असाइनमेंट पहले करो, जस्ट ड्रॉ द करेक्ट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट वेरी फर्स्ट बेसिक थिंग। So the assignment is I'm going to draw all of them incorrectly, मतलब इनकरेक्टली इनकम्प्लीट होंगे, ठीक है। वो खुद ही उधर से ना वो बकेट में से उठा के कभी एच जोड़ दो, कभी ओ जोड़ दो, कुछ भी करते रहो, बस एंड में स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। अच्छा ये मैंने किया है, मैंने इसका जोड़ दिया इनको, ठीक है। इनको इसका स्ट्रक्चर ठीक करो, जिसके बॉन्ड्स कम है उनके साथ ना चीजें ऐड करते जाओ, ठीक है। नंबर 2, हमजा इज दिस क्लियर? मिनाइल क्लियर है? हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, नंबर 3 इज, अच्छा नंबर 3 है। नंबर 4, number 5 is,
5 क्वेश्चन है, 10 मिनट्स है, जल्दी से कोशिश करो। आसान तरीका है, एच जोड़ते जाओ, ठीक है? वो उस बकेट में से ना कोशिश करो थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ, कोई और एटम भी उठा लो, लेकिन जल्दी करना है बस। सारों के इर्द गिर्द ना एच ऐड करके उनको कंप्लीट करते रहो, ठीक है? मैं व्हाट्सएप पे वेट कर रहा हूँ, ये क्लास अभी चल ही रही है, ठीक है? बस इसको मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ।